बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें 238 एम्प्लॉई जो ईओबीआई के नौकरी से निकाले गए थे बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उनकी बहाली का ऑर्डर जारी किया और उस पर फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने एक जुर्रतमंदाना इक़दाम किया और उसकी अप्रूवल ना दी। उस बाबत हमने एक वीडियो अपलोड की थी, अप्रिशिएट किया था ईओबीआई के इस अमल को, इस इक़दाम को। तो वो आज हम उस जजमेंट का ज़िक्र करेंगे जिस जजमेंट की रोशनी से उन लोगों को इस नौकरी से निकाला गया था। एक ईओबीआई में जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुई थी उस बाबत एक ऑर्डर जारी हुआ था। वो जजमेंट थी 2014 SCMR 949 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, सैयद मुबशर रज़ा जाफरी वर्सेस ईओबीआई। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी डिटेल्ड जजमेंट हुई। इसमें कोई 23,648 लोगों ने अप्लाई किया। जिन लोगों को अपॉइंट किया गया उनको मेरिट को नज़रअंदाज करते हुए इलीगल तरीके से उनको अपॉइंट किया गया और कुछ की तो रेगुलराइजेशन की समरी भी ऊपर भेज दी गई। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सीरियस व्यू लिया और सीरियस व्यू लेते हुए इन सारी जजमेंट्स को सेटिसाइड किया और ऑर्डर किया कि इंक्वायर किया जाए, नैब इसमें इंक्वायरी करे और 2 माह के अंदर अंदर जो डिलिंक्वेंट्स हैं, जो इस इलीगल अपॉइंटमेंट में, जो इलीगल प्रोसेस में शामिल हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इस जजमेंट के आने के बाद नैब ने तो इंक्वायरी क्या करनी है या उनके ख़िलाफ़ जो अरबाब इख्तदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या होनी है, बल्कि जब वही गवर्नमेंट वापस ईवान के इक़्तिदारों में आई, जब वही गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स मंदोखेल साहब दोबारा इक़्तिदार में आए तो उन्होंने उनका स्ट्रेट अवे बहाली का ऑर्डर जारी कर दिया और डायरेक्शन दे दी कि इनको बहाल कर दिया जाए विद ऑल बैक बेनिफिट्स। तो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट पड़ी, सीरियस जजमेंट थी, उसके हम कुछ आपको पैरे पढ़ के सुनाते हैं। रिपोर्ट ऑफ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ ईओबीआई डिस्क्लोज्ड and mismanagement, corruption, nepotism, politicizing of disputed appointment which were made in a malefied manner, thereby crushing the merit criteria in public owned establishment by the government. Many persons like the then chairman of EOBI did not realize or adhere to the reality of merit criteria and were adamant to play the future of the younger generation for their own good and to achieve their nefarious design. Record shows as to how persons belongs from one political group and from a certain constituencies areas from where brother and nephew of the chairman EOBA were elected as parliamentarian were obliged and accommodated in the matter of their appointment in bulk is in an illegal manner. Applicants 23,648 in a number who had applied for vacancy of EOBI had equal opportunity as a citizen of a country in terms of Article 25 of the Constitution, but were thrown out of the competition despite the fact that they also meet the requisite qualification and might have been more meritorious but could not exert either political pressure or avail the fruit of nepotism or corruption, forming the basis for the selection and appointment of appointees in question, many of whom had not been employed for a job. Many of whom had not even applied for the job in terms of the advertisement for vacancy. Appointees in the present case succeeded in getting entry from the back door at the cost of many other bona fide candidates whose application was literally thrown in the dust bin in an unceremonial manner just for the sake of accommodating the blue-eyed one. Gain availed by the illegal appointees were at the cost of other deserving candidates who had applied for these posts, being a citizen of the country with the legitimate expectation that they would be able to seek appointment on the basis of their eligibility cum merit criteria to be observed as per the applicable rules and regulation of the EOBI. Gotten gains
could not be defended, protected. Illegal gains could not be defended, protected under any canon of law and on humanitarian consider. A record also showed that 238 employees official in EOBI were appointed on contract daily and contingency basis during the period of September 2011 to May 2012 in flagrant violation of the prescribed rules and regulation. Subsequently, such employees were also purportedly regularized. For regularization of such employees, some summary were floated and illegal approval was obtained from the cabinet subcommittees, which otherwise neither figured anywhere in the hierarchy of EOBI nor had any legal authority to rectify such illegal and wrong appointments. Said contract of appointment were made at the time when there is no available post for these persons, and the whole exercise was on the face of it undertaken on the basis of nepotism and political pressure in vague during the period. All this exercise was undertaken by the officials of EOBI despite a specific stay order issued by the Supreme Court. Supreme Court observed that it was a sad fact of our bureaucracy that it could be so to whims and wishes of the ruling elites or class, which resulted in obvious weakness of the state institutions such as EOBI, where by the general public whose interest such establishment had been charged with protecting were adversely and heavily affected in a different ways. Supreme Court directed that all illegal appointments, deputation, absorption made in EOBI as detailed in the report of fact-finding committee were without lawful authority and of no legal effect, and according to the service of such employees to terminated forthwith. इस बड़ी डिटेल जजमेंट को जब पढ़ा गया तो इसमें ये समझ आई कि ये किस तरह शब खून मारा गया EOBI पेंशनर के हक पे, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको करेक्ट करने की कोशिश की तो सब्सिक्वेंटली वही पार्टी जब हुकूमत में आई तो उन्होंने दोबारा ही वही 238 लोगों को रीइंस्टेट करने का ऑर्डर किया विद ऑल बैक बेनिफिट। तो इसको दोबारा से फिर एक रुकावट का सामना करना पड़ा। बड़े दुखी दिल के साथ ये वीडियो बना रहे हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि EOBI के साथ क्या जुल्म हो रहा है, क्या ज़्यादती हो रही है। हमें दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।